Hi guys, Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel Kala Charita Se. Now I am tell you about OBS, Open Broadcast Service. हमें गेम कैप्चर करने के लिए कोई भी डिस्प्ले कैप्चर करने के लिए ओपन ब्रॉडकास्ट सर्वर इधर से हम कर सकते हैं. Now I am tell you OBS Studio 29.1.1 64-bit. Download for Windows PC. Free and open software for video recording and live streaming. Developer OBS Studio version 29.1 64-bit. Updated May 10 2023. Requirements हम विंडो 11 और 10 पे कर सकते हैं. साइज़ का 127.89 MB. और हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. फ्री एंड ओपन सोर्स, और ये हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं softly.com साइट से. इधर से हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, नाउ आई एम टेल यू सम सोर्सेज. फ्री एंड ओपन सोर्स software for video recording and live streaming. OBS Studio 64-bit is a free software for video recording and live streaming. ये वीडियो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बिल्कुल फ्री है. vmsoftly.com ऐप से साइट से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. OBS स्क्रीन रिकॉर्डर लेट यू स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्विकली एंड ईजीली, और ये हम इधर से ईजीली कर सकते हैं. ऑन विंडो OBS Studio features allow you to set up an unlimited number of scenes. You can switch between stimulus via custom tension. OBS Studio download for PC latest version 29.1 support Windows 7, और ये Windows 7, Windows 10 और Windows 11, Windows Vista, Windows XP and Mac PC. Download the OBS Studio. Set up X file without any crack for your 32-bit and 64-bit desktop for PC from our fast and secure downloading servers. OBS Studio provides real-time capture, encoding and broadcasting for YouTube, Instagram and many other provide high performance real-time video audio capturing and mixing. और ये मिक्सिंग के लिए, कैप्चरिंग के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. क्रिएट सीन मेड अप ऑफ मल्टीपल source including window capture, image, text, browser, window, webcam capture, CRUD and more. OBS Studio with a powerful API and willing public and clips to provide further customization and functionality specific to your needs.